See beta, reflexive pronoun and intensive pronoun to a certain extent are similar. Similar in the form of words only. ठीक है? तेरी माँ चाहता similar in the form of words only जो मतलब चाहे तो जेके हिन पासे वाला लफ्ज़ आन जेके black में मुझे black colored नौजिंग के ये words at the same time असां as a sorry use कर सकते intensive pronoun use कर सकता and at the same time असां उनके as a reflexive pronoun use कर सकता words सागा होगा but because of the purpose having difference purpose में फर्क हुजण जे करे असां उन्हनि जी माना थोड़ी अलग था खणूं purpose में फर्क कींदो पवे वो ईअं त लफ्ज़ जेको रिफ्लेक्सिव आहे उहो लफ्ज़ वरितो वियो आहे टू रिफ्लेक्ट मां ठीकु आहे टू रिफ्लेक्ट मां रिफ्लेक्ट जो मतिलबु छा आहे कंहिं बि शइ जो पंहिंजो पाण खे पाण ज़ाहिर करणु या वरी असां हिते हिन जे हिसाब सां असां इहा खणंदासीं मीनिंग त कंहिं बि माण्हू जो एक्शन उन ते पाण ते थिए थो त एट द सेम टाइम उहो एक्शन परफॉर्म करण वारो बि थिए थो ऐं एट द सेम टाइम उहो एक्शन रिसीव करण वारो बि थिए थो त ॿई क्वालिटीज़ उन में अची थी वञनि जॾहिं ॿई क्वालिटीज़ उन में अची थी वञनि त इन क़िस्म जे प्रोनाउन खे असां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चवंदासीं जी मिसाल तौर आई हर्ट माई सेल्फ मां पंहिंजे पाण खे ज़ख़्म ॾिनो त जेको हर्ट करण वारो बि मां पाण आहियां ऐं जंहिंखे ज़ख़्म मिले थो उहो बि मां पाण आहियां दे हेल्प themselves मदद करण वारा बि उहे पाण आहिनि ऐं जंहिंजी मदद कनि था उहे पाण आहिनि he killed himself हुन पंहिंजे पाण खे मारियो मारण वारो जेको आहे उहो पाण आहे ऐं मरण वारो जेको आहे उहो बि पाण यानी कि कातिल ऐं मक़तूल ॿई हिकिड़ो ई माण्हू था थियनि सो इन खे असां चवंदासीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिकॉज़ किलिंग वारो एक्शन परफॉर्म करण वारो पंहिंजो पाण ते परफॉर्म थो करे त असां चई सघूं था त उहो पंहिंजो पाण ते रिफ्लेक्ट थो करे इन खे असां चवंदासीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंटेंसिव प्रोनाउन जो छा पर्पस आहे Intensive pronoun जो basic purpose जेको आहे उहो इहो आहे to put emphasis, stress or force or focus on the doer of subject action या subject कंहिं बि एक्शन करण परफॉर्म करण वारे ते असां फोर्स था ॾियूं कंहिं बि एक्शन परफॉर्म करण वारे ते असां एम्फेसिस था ॾियूं उन जी पर्सनैलिटी खे हाईलाइट करे था ॾियूं या उन जी पर्सनैलिटी खे असां वाज़े करे था ॿुधायूं उन खे असां चवंदासीं एम्फेटिक प्रोनाउन चवंदासीं या इंटेंसिव प्रोनाउन चवंदासीं जी मिसाल तौर हिन में छा थो थिए सब्जेक्ट जेको आहे एक्शन परफॉर्म करण वारो ॿियो आहे ऐं जेको ऑब्जेक्ट एक्शन रिसीव करे थो उहो ॿियो आहे पर असां एक्शन परफॉर्म करण वारे ते फोकस ॾींदासीं एक्शन करण जे लाइ लाइक दिस आई माई सेल्फ किल द लॉयन मूं ज़िंदगी में कॾहिं मक्खी बि न मारी आहे बट मां अचानक शींहं खे मारे थो विझां त मां पंहिंजी पर्सनैलिटी ते फोकस थो ॾियां पंहिंजी इन किलिंग वारे एक्शन ते जेको मूंखां परफॉर्म थियो उन ते ज़ोर थो ॾियां त मां हिते साॻियो वर्ड कंपाउंड प्रोनाउन थो यूज़ कयां माई सेल्फ आई ॻाल्हि समझ में अची अथई बेटा अली ॻाल्हि समझ में आई बेटा Ali, are you listening to me? Are you there? Sardar Ahmed, Taharur Talika पायो स्क्रीन पे. Okay. Ali, can you listen to me, Ali? ॻाल्हि समझ में आई इन्हें सर अली मैसेज क्यों नेट स्लो दस अच्छा सही है. Now, for example, let me give you another one example. मां ॿिन्ही पासे sentences लिखणो थो वञा हिकु पासे सां reflexive pronoun जा example था लिखूं ॿिए पासे सां intensive pronoun जा reflexive pronoun ॿियो आहे असां वटि intensive pronoun. For example, असांखे यूज़ करणो आहे myself ते मां हिन पासे example लिखां थो I saw myself या असां ये लिखूं I for example hit myself with a bat ऐं हिन पासे साॻियो myself वारो जुमिलो था लिखूं असां I myself made the score about 100 runs. See, ॿिन्ही में फ़र्क़ु आहे हिते myself अलॻि थो थिए उते myself अलॻि आहे हिते जेको myself आहे उहो at the same time असांजो ऑब्जेक्ट बि आहे एक्शन रिसीव थो करे ठीकु आहे ऐं हिन पासे जेको असांजो myself आहे that shows emphasis on the personality of I जी personality ते emphasis थो ॾे likewise for example लफ्ज़ आहे yourself या yourselves
इन जो एग्जांपल की थी दो you teach yourselves तव्हां पंहिंजो पाण खे पढ़ायो था now हिन पासे अगेन yourself जो या yourselves जो एग्जांपल की थी दो you have watched the murder yourself now see हिन ॿिन्ही जुमलनि में फ़र्क़ु आहे हिन पासे जेको आहे सब्जेक्ट आहे you ऐं उहो सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करे थो टीचिंग जो जंहिंखे असां वर्ब था चऊं ऐं ऑब्जेक्ट जेको आहे उहे बि उहे पाण था थियनि यानी कि टीचिंग जो एक्शन उन्हनि ते पाण ते रिफ्लेक्ट थो थिए त असां इनखे चवंदासीं that is here a reflexive pronoun but हिन पासे जेको सब्जेक्ट आहे उहो असांजो you इहो जेको सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करे थो वॉच जो उहो कंहिंखे थो ॾिसे मर्डर खे थो ॾिसे that is object here but हिते जेको yourself आहे उहो इन you जी पर्सनैलिटी ते एम्फेसिस थो ॾे you जी पर्सनैलिटी खे फोकस थो ॾे हाईलाइट थो करे इनखे असां चवंदासीं इंटेंसिव प्रोनाउन चवंदासीं आई ॻाल्हि समझ में अची अथई बेटा हिनमें कंहिंखे कंफ्यूजन आहे कंहिं ॿिए खे any student if has got any kind of confusion regarding these two pronouns can ask me now Shiraz is everything clear Yes, sir. okay girls do you have any confusion in this type of pronoun सर इंटेंसिव प्रोनाउन समझाया जा रहा है see intensive के तव्हां सिर्फ़ एतिरो सम्झो त intensive pronoun जॾहिं बि असां इस्तेमालु कंदासीं उहो सब्जेक्ट यानी कि एक्शन परफॉर्म करण वारे जी पर्सनैलिटी खे फोकस ॾींदो या उन जी पर्सनैलिटी ते एम्फेसिस ॾींदो ज़ोर ॾींदो उनखे इंटेंसिव चइबो आहे उन में ऑब्जेक्ट ॿियो को थींदो आहे जीअं मिसाल तौर I myself killed a lion मां पाण जेको आहे शींहं खे मारियो आहे हाणे जेको इहो मां पाण थो चवां पाण जेको आहे लफ़्ज़ myself जी माना थो ॾे ऐं उहो मूं यानी कि आई जी पर्सनैलिटी ते फोकस थो ॾे सिर्फ़ एतिरी हिते अंडरस्टैंडिंग रखोसि हिनजी हेसि ताईं क्लियर आहे यस सर okay now after these two pronouns we've got another one pronoun that is let's have a look on the list as a reflexive pronoun theo let me give it color yellow green and then we also got intensive or emphatic pronoun assign theo yo relative pronoun we have done distributive pronoun assign reciprocal pronoun these two pronouns the word distributive is actually conveying the sense of to distribute distributive word जेको आहे या distributive pronoun जेको आहे इहो असांखे sense to ॾे gives the sense of distribution जॾहिं असां चओ distribution of nouns त असां उन नाउन जे नाले जे बजाए असां उन जॻह ते कुझु लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदा आहियूं यानी कि शयुनि खे तक़सीम करणु शयुनि खे विरहाइणु शयुनि खे बाटणु इनखे चइबो आहे असां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन चवंदा आहियूं उहे कहिड़ा कहिड़ा वर्ड आहे हिकिड़ो ईच ॿियो वर्ड आहे असां वटि एवरी ॿियो वर्ड आहे असां वटि आइदर एंड अनदर वन वर्ड इज नाइदर हे जेके चार लफ़्ज़ आहिनि इन्हनि चइनी खे असां चवंदा आहियूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन चवंदा आहियूं व्हाट इज देयर फंक्शन all of these are used to divide the things or to distribute the things or to separate the things from one another जॾहिं असां शयुनि खे डिस्ट्रीब्यूट था कयूं त इन में असांखे कहिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रखणी पवंदी त अॼु जेके शयूं आहिनि उहे मोस्टली इन प्लूरल आहिनि या ग्रुप में आहिनि उन ग्रुप मां असां हर हिकु इंडिविजुअल खे अलॻि अलॻि करे पेश था कयूं त उते असां ईच इस्तेमालु कंदासीं फॉर एग्जांपल ईच ऑफ द बॉयज इन द क्लास गॉट फर्स्ट पोजीशन see मां छा थो चवां of course we have got a group of boys here in the class पर इन्हनि मां हर हिकु खे separately individually अलॻि अलॻि करे मां पेश थो कयां that gives a sort of hidden sense that is individually यानी कि अलॻि अलॻि इनफरादी तौर ते इनखे असां each इस्तेमालु कंदासीं we distribute the boy likewise for example every student या everybody got failed in mock test see जॾहिं असां चवंदा everybody that means whatever the group we have got selectedly each जेको असां हर हिकु खे अलॻि अलॻि सिलेक्ट करे था पेश था कयूं ऐं उहो ॿुधायूं था त हिन ग्रुप मां सभिनी जेको आहे उहे अलॻि अलॻि थी करे फेल थिया आहिनि मॉक टेस्ट में
सो ॿिन्ही में असां अगर माना जे हिसाब सां ॾिसूं त असांखे वॾो को डिफरेंस नथो मिले, बट टू सर्टन एक्सटेंट इन्हनि जो सेंस थोरो मुख़्तलिफ़ आहे। आई ॻाल्हि समझ में अची अथई बेटा? लेडी, okay beta, let me repeat with another example. For example, ma agar sense ॾियां थो in the table form, look at this. Ma example ॾींदो थो वञा, each of the family members got surprises on the Christmas day. One sentence. Everybody would be, everybody got prizes in the competition. Second example, each of the pens were sold in the market. Every pen was missing from the market. Again, the next example is each student should try his or her level best. Every student has to, should try their level best. Now see, मां हे मुख्तलिफ एग्जांपल्स ॾिनान। हाणे जॾहिं असां ईच इस्तेमाल था कयूं, what you have to think, you have to think individual person. And जॾहिं असां every था चऊं, that means one but representing all others. ठीक है, या individual but representing all others. जब मैं चाहता हूं each of the pens मतलब individual pen, single pen. But जब मैं चाहता हूं every pen मतलब all the types of pen. जब मैं चाहता हूं each student मतलब one by one individually. Likewise, जब मैं चाहता हूं every student मतलब of course singly, भले singly हुजे but together with others. आई ॻाल्हि समझ में? हिते जेको असां ईच जो कॉन्सेप्ट था ॾियूं बेटा, इन जो बेसिक पर्पस इहो आहे त असां ग्रुप मां हर हिक खे अलॻि अलॻि करे असां डील था कयूं। जॾहिं एवरीबॉडी था चऊं त उहो हूंदो ग्रुप जो रिप्रेजेंटेटिव, पर असां उन खे एज वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटायर ग्रुप, उन जो ओपिनियन पूरे ग्रुप जो ओपिनियन हूंदो, उन जो आइडिया पूरे ग्रुप जो आइडिया हूंदो, उन जी थिंकिंग पूरे ग्रुप जी थिंकिंग हूंदी, उन जो स्कोर पूरे ग्रुप जो स्कोर हूंदो। इन खे असां एवरीबॉडी जे हिसाब सां खणंदासीं। Likewise, जॾहिं मां चवां थो each of the pens मतलब हर एक सिंगल पेन जेका भी आहे उहा अलॻि अलॻि असां इंडिविजुअली था करे खणूं। बट मां चवां एवरी पेन त मतलब कलेक्टिवली जेका भी पेन हुजे हर क़िस्म जी, उन खे कलेक्टिवली असां हिकु जगह ते महदूद था कयूं ऐं हिकिड़ी पेन खे सभिनी जो रिप्रेजेंटेटिव था बनायूं। त एवरी पेन इज यूज्ड फॉर राइटिंग। आई ॻाल्हि समझ में बेटा? a bit complex आहे, इहो थोरो घणो मुश्किल आहे कि हिते फ़र्क़ु करण में, बट ब्रेंडन मार्टिन असांखे अहिड़े क़िस्म जा एग्जांपल ॾेई करे थोरो फ़र्क़ु ॿुधाए थो। ॿियनि बुक्स में एतिरो असांखे फ़र्क़ु नथो मिले। फॉर एग्जांपल हिकिड़ो पीस ग्रामर जेको बुक आहे दादू में तमामु घणो मशहूरु आहे, उहो किताब असांखे इन ईच एंड एवरी में को फ़र्क़ु नथो ॿुधाए, सवाइ इन जे कि एवरी जेको आहे उहो पाण सां गॾु अक्सर नाउन खणंदो आहे। ईच जेको आहे पाण सां गॾु जॾहिं नाउन खणंदो आहे त उहो उन जी माना अलॻि थी वेंदी आहे। ॿियो असांखे डिटेल में एग्जांपल नथो ॾे को बि किताब। क्लियर आहे सीधाई?
boys? Shiraz, Zafrullah, Yes, sir. Clear. Anila, Bushra, and Saeed, Salma, Iman Shah. Do you have any confusion? No, sir. Okay, let me show you a sort of table if I can find here. See, my screen share तो क्या? लेकिन उनकी टेबल आ उन्हीं में ये फर्क clearly mention थे. Look at this. Screen जाग थे बेटा? Yes, Yes, sir. sir. See, every May we use every to talk about collectively things more than individually. असा कंदा सी single body, but वे पूरी collection के represent कंदा. ऐसा each कंदा individual के, but वो individual पाने के represent कंदो, लेके मानो के या लेके group के member के represent न कंदो. ठीक है? यो सिर्फ असा concept मिले तो इन्हें खावती का सा concept अगर पढ़ना चाहिए तो थोड़ी confusion थी भी थी. क्या टाइम मुख्तलिफ किताब इन्हें के as a synonym represent कंदा. So असा confusion की थोड़ी अफाल skip था के. Is that clear, beta? Yes, sir. Okay, now we've got here another one, reciprocal pronoun. The reciprocal reactions बताऊंगा, reciprocal reaction चाहूंगा या reciprocal pronoun चाहूंगा. Look at this, a pronoun that is used to show or highlight two-way approach. Two-way approach मतलब क्या है? Like अगर for example इन्हें कि मैं अगर हिंदी साथ से define किया, it will be more like this. Let me select the color here. Agar one body, this one, if one body is hitting another one person, then the reaction comes from the opposite side as well. Newton's law of motion, every action has an equal and opposite reaction. So your reciprocal में चीज़ बने. को भी अगर मानो इन पास एक fighting to action perform करे तो that. Hello, बेटा आवाज अच्छी थी? हाणे थी अचे सर. Okay. Yes, sir. हाणे दीजिए. ठीक. So reciprocal जो basic purpose क्या है? Every man जेकरे के बिन मां अगर कोई को action perform तो करे तो each other. Love चेको each other आ यो सा desire तो करे opposite reaction. अगर हिकने मानू थप्पड़ नहीं तो बे मानू का थप्पड़ लगी, हिकने मानू डर का ना तो बे मानू डर का ना, मतलब opposite reaction होते हैं. ठीक है? For example, we helped one another. असा हिक बे जी मदद कई सी. हाने जेको यो one another चियो again हिकने मानू मदद कई तो बे मानू भी उनजी मदद कई. बे मानू मदद की तो वरी पहले मानू जी मदद की, यो opposite reaction जेको थे तो. इन्हें कैसा चंदा reciprocal pronoun चंदा. ये reciprocal pronoun यूज किया विधान to show two-way process या two-way approach. ये जो मतलब छा होंदो आ बिनी तरफन का कोनो को reaction अचे या बिनी तरफन का कोनो को action perform थे. इस तरह क्लियर आ? हेलो. सर जी ताईं सर. इंटरनेट में स्लो आ. अच्छा इंटरनेट में मसलो आ. असा आवाज झटकन में तो अचे. चलो सही है. ठीक है, सीधे ऐसा pronoun थियो complete. अगर anybody has got any kind of confusion regarding pronoun तो वो ताम का पूछी सको था. Then we after this pronoun we've got adjective to talk about. सर समझ में कुछ. 2 मिनट भी. बेटा नेट प्रॉब्लम है शायद, नेट प्रॉब्लम आई थिंक. लेट मी सी. मुझे हाने आवाज क्लियर थी बेटा? हेलो.